हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैफल हाल, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? उम्मीद है, दुआ है कि आप लोग अच्छे हो। दिन भी अच्छा गुजरा हो आप लोगों का, क्रिकेट वगैरह भी इंजॉय की हो। जो ये ग्लोबल ग्लिच आई हुई है यूट्यूब के, आई हुई थी एटलीस्ट शाम तक आई हुई थी, उससे आप लोग ज्यादा अफेक्ट ना हुए हो। हमारी आज दोपहर वाली स्ट्रीम उससे थोड़ी सी अफेक्ट हुई थी, बट थैंकफुली वी मैनेज टू कम अराउंड एंड बीट दैट। और अब हम वापस आ गए। हम आजकल प्रीव्यू करें सारी आईपीएल की टीम्स का, 10 की 10 टीम्स का। आज से पहले हमने मुंबई इंडियंस का, सनराइजर्स हैदराबाद का, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का, राजस्थान रॉयल्स का, लखनऊ नहीं, गुजरात टाइटंस का, और किसका, हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स का कर लिया। और आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स का। हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम देखेंगे, उनके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे, किस किस अपॉर्चुनिटीज टीम के पास है वो आइडेंटिफाई करेंगे, किस किस्म के थ्रेट्स टीम फेस करती है वो आइडेंटिफाई करेंगे। और आज स्ट्रीम थोड़ी सी अलग लग रही है और स्ट्रीम की क्वालिटी भी थोड़ी सी खराब आप लोगों को ज्यादा लग रही होगी, इसलिए क्योंकि आई एम स्ट्रीमिंग यूजिंग स्ट्रीम यार्ड। और आज सेकेंड हाफ में इस शो के हमें ज्वाइन करने वाले हैं अभिलाष, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत बड़े डाई हार्ड फैन है, और जिनको कई लोग कहते हैं कि क्रिकेट का या चेन्नई सुपर किंग्स का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। उनको हर चीज की काफी ज्यादा डिटेल में नॉलेज है। जो कोई भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई पुरानी चीज, कोई ट्रिविया, कोई क्विज, और उनके पास जवाब होगा। सो अभिलाष हमें ज्वाइन करेंगे टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ दिस सेशन। लेकिन पहले सेशन में हम और आप मिलकर डिस्कशंस करेंगे। उससे पहले मुझे नहीं कुछ भी नजर आ रहा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि आर वी लाइव, इज द स्ट्रीम्स क्वालिटी ओके? आपको मेरी आवाज भी आ रही है, आपको मैं नजर भी आ रही हूँ? मेरे इंटरनेट का इशू तो रोज रहता ही है, लेकिन इंटरनेट के साथ साथ आज हम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। सो आई एम नॉट, वी आर लाइव राइट? ऑलराइट गाइस, सो टाइम जाया नहीं करते हैं, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कितने सारे फैंस हैं यहाँ पे, मुझे बताएं। मुझे पता है आप लोगों में से काफी सारे, वी कैन सी यू, कुमार मेहरा, हाई गोइंग आउट यू, शिखर अग्रवाल, चिराग, क्रिकेट टॉक, हेलो गोइंग आउट यू, वरुण कुमार, हेलो गोइंग आउट यू, बाबर, हेलो गोइंग आउट यू, उर्वा, हेलो गोइंग आउट यू। और जितने लोग अभी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से हेलो। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लेती हूँ, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड में लाइटिंग का भी इशू है, इट गेट्स वेरी डार्क। सो उसको यहाँ से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो यू गाइस, चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर नजर डालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आपको पता है डिफेंडिंग चैंपियंस है, 4 टाइटल जीते हुए हैं। लास्ट ईयर भी जीती थी, कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के फाइनल एक बार, और इसने अपना टाइटल अपने नाम किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। और अच्छी टीम है, सक्सेसफुल टीम है। ऑफ कोर्स महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के कैप्टन है, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट, द फाइनेस्ट कैप्टन्स हैं, और डेफिनेटली नॉट, इन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है। और आज मैं कहीं पे पढ़ी थी, वो कहते हैं ना, कई कई बार कई समझदार लोग कहते हैं कि 2 अच्छे खिलाड़ियों से एक अच्छा कैप्टन, एक अच्छा लीडर ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक उसी तरह का रोल है महेंद्र सिंह धोनी का भी चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में। ही इज मोर ऑफ अ लीडर एंड ही इज देयर टू लीड द टीम। उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो कुछ इतनी खास नहीं है। और अगर आप हर्षा भोगले की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का, मैनेजमेंट का, ओनर्स का, महेंद्र सिंह धोनी रिटेन करना एक इमोशनल डिसीजन से ज्यादा कुछ नहीं है। और देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ भेजना है, बीच में भेजना है, लग गई तो लग गई, आउट हो गए तो आउट हो गए, उस तरह, या इनको नीचे करके ऊपर भेजना है कहीं पे, कि जितनी देर भी जो भी कर लिया, वेल एंड गुड, विल वेट टू फाइंड दैट आउट। लेकिन अगर रिटेंशन की बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो और इनके एक्सपेंसिव प्लेयर की, तो रविंद्र जडेजा इनकी एक रिटेंशन थी, जो महेंद्र सिंह धोनी से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और एमएसडी ऑफ कोर्स इस टीम के पास इनकी रिटेंशन की अगर बात करें, मोइन अली, जो कि टीम का इम्पोर्टेंस भी है, और जो टीम को बहुत ज्यादा
टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते आए हैं, बड़े वर्सेटाइल प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग भी स्पिन काफी अच्छी करा लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी जगहों पर कर सकते हैं, प्रमोट करते हैं तो ऊपर जाके भी अच्छा करते हैं, नीचे आकर भी अच्छा कर देते हैं। और देन ऋतुराज गायकवाड़, द ब्रिलियंट, द मास्टर, द रन मशीन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स ऑफ लेट अगर हम बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, उनको भी रिटेन कर लिया था इसमें आईपीएल की रिटेंशंस में। मोइन अली का आप लोग भी जानते हैं, सारी खबर मैं भी जानती हूँ। हैप्पी पाकिस्तान डे टू ऑल दोज ऑफ अस हु आर सेलिब्रेटिंग आज 23rd ऑफ मार्च, पाकिस्तान डे। जितने लोग भी सेलिब्रेट करते हैं उनको हैप्पी पाकिस्तान डे। अच्छा, मोइन अली की अगर बात करें तो उसकी खबर ये आ रही है कि मोइन अली विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फर्स्ट मैच एटलीस्ट। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का, लास्ट सीजन का फाइनल, इस सीजन का ओपनर होने वाला है। लेकिन मोइन अली को इंडिया का वीजा अब तक नहीं मिला। ही हैज नॉट बीन एबल टू सिक्योर द वीजा टू ट्रैवल टू इंडिया, बिकॉज़ ऑफ व्हिच देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिले इन हिज ट्रैवलिंग, और जिसके चलते वो कम से कम पहला मैच हर्ष अग्रवाल एंड शिखर अग्रवाल, हाई गोइंग आउट टू बोथ ऑफ यू, तुम लोग दोनों भाई हो क्या? अग्रवाल आए हमारे पास, आए हैं आज। तो मोइन अली मिस कर देने वाले हैं अपना पहला मैच। थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक बात होने वाली है, और बहुत ज्यादा बड़ी, अगर परचेस बैग्स की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी परचेसेस की। और जहां पे हमें बहुत, जैसे अगर मुंबई की टीम की बात करें या इवन हैदराबाद की टीम की बात, किसी भी टीम की बात करें, पूरी पूरी टीम का नक्शा बदल गया है, पूरी टीम के डायनामिक्स, टीम की कोर, टीम का पेस, टीम का सब कुछ बदल गया है, ए टू जी। कई टीम्स के तो कैप्टन्स भी बदल गए। लेकिन अगर आप इस टीम को देखेंगे ना, चेन्नई की टीम को, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, हाँ, एक्सेप्ट फॉर सुरेश रैना, क्या नाम था उनका, चिल्ला थाला नहीं था क्या? क्या बोलते थे तुम लोग? चिन्ह थाला, आई फॉरगॉट। रिद्धि, हाई गोइंग आउट टू यू। सो भूल गई हो गाइस। अच्छा, एनीवेज जो भी था, सुरेश रैना मिसिंग है, लेकिन इस टीम ने अपनी पूरी तकरीबन कोर रिटेन की नहीं की तो उनको बाय बैक कर लिया। सो अगर बायबैक्स की बात करें तो उन्होंने दीपक चाहर को बायबैक किया, जो बहुत वैल्यूबल रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले कुछ सीजन्स में। जो चिन्ह थाला नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, आई एम टॉकिंग अबाउट सुरेश रैना। उनका क्या नाम था? अंबती रायुडू, अगेन वेरी गुड, हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। अरे कहाँ यार, आज मैं स्ट्रीम यार्ड से करी क्योंकि हमारे पास गेस्ट आने वाले हैं, अल्ट्रानॉक। सो रॉबिन उथप्पा को भी इन्होंने बाय बैक किया है, ड्वेन ब्रावो को भी बाय बैक किया है, और इन्होंने अपनी बहुत ज्यादा बड़ी टीम को, बहुत ज्यादा प्लेयर्स को बाय बैक कर लिया। तो जब आप इनकी प्लेयर्स को देख रहे होते हैं ना, तो आप टीम के कॉम्पोजिशन को, तो आपको लगता है कि हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स की जो कोर है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है, वही प्लेयर्स है, वही फील आ रही है, वही टेम्पलेट है। अगर हम इस की बात करें, चेन्नई थाला मीन्स राइट हैंड। हाय 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 हाय, चेन्नई थाला बेचारा चला गया, पूरी की पूरी कोर रिटेन होगी, लेकिन एक बंदा चला गया, सुरेश रैना, मिस्टर आईपीएल, जिसने इस टीम के लिए इतने रन्स बनाए, इतने रन्स बनाए, इतने रन्स बनाए कि पूछे मत। बट उनको लूज कर दिया टीम ने। और एक और, अर्शलोन, हाई गोइंग आउट टू यू, एक और बंदा मिस चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस भी करेंगे और हम सब करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो वो खेलते हुए इस सीजन नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको देखेंगे एक और कलर की जर्सी डॉन किए हुए। किसकी बात करी मैं? जी हाँ, फाफ डुप्लेसी की बात करी है, शिखर अग्रवाल। फाफ डुप्लेसी को चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज्यादा मिस कर देने वाली है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा थे फाफ डुप्लेसी चेन्नई के स्क्वाड का, इनकी कोर का, रन इनसे बन रहे थे, जबरदस्त के ये फील्डर थे, टीम का इस तरह इंपॉर्टेंट हिस्सा थे कि मतलब मुझे तो याद नहीं है कि मैंने फाफ को, मतलब आई कुड जस्ट लुक एट फाफ एंड इमेजिन हिम। जब मैंने उनको टी10 लीग में भी देखा तो बस मैं उनको हमेशा रिलेट करती ही चेन्नई के साथ थी। अब ऑफ कोर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लीड करने वाली है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उनको बहुत ज्यादा मिस करने वाली है। और फाफ की एब्सेंस में जो उनका प्लान है, सेकंड प्लान या प्लान बी, जो उनका प्लान ए बन गया है, सुरेश रैना को विकी महाराज मिस करेंगे, हम भी मिस करेंगे, लेकिन सुरेश रैना विल बी ज्वाइनिंग आकाश चोपड़ा एंड कंपनी इन द कॉम बॉक्स, तो हमको कमेंट्री करते हुए सुनेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कॉनवे को रोप इन किया है एज ए रिप्लेसमेंट फॉर फाफ डुप्लेसी, बट ऑफ कोर्स मतलब मैं इसके आगे कुछ कहूं, बट ऑफ कोर्स में ये छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने मिड सेंटनर को भी
जो कीवी के जो वहां के न्यूजीलैंड के हैं मिड सेंटर, उनको रोप इन किया है, और एडम मिलन को भी रोप इन किया है। एडम मिलन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली कीपिंग समवन्स इंजरी इन माइंड। तो काफी ज्यादा अच्छे ऑलराउंडर्स भी, अगर आप इस टीम की बात करें, जो आगे जाएंगे जब हम इस टीम की स्ट्रेंथ्स वगैरह पर डिस्कशन करेंगे, तो ऑलराउंडर्स, हाँ, शार्दुल ठाकुर को टीम मिस करेगी, फाफ डुप्लेसी को टीम मिस करेगी, एंड सुरेश रैना को टीम मिस करेगी। काफी ज्यादा प्लेयर्स उन्होंने बाय बैक किए, काफी ज्यादा प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं, लेकिन ये तीन दिल जो थे ना, तीन अगर दिल हो सकते हैं, तो ये तीन दिल जो है ना, ये चेन्नई सुपर किंग्स इस साल इनके बगैर खेलने वाले हैं। शार्दुल ठाकुर का एब्सेंस भी इनको काफी ज्यादा हॉन्ट करने वाला है, और दीपक चाहर की इंजरी इनको, आई डोंट, इनको स्पेयर करने वाली है या नहीं, वी विल वेट टू फाइंड आउट। ऑलराउंडर्स की मैंने बात की है, ड्वेन ब्रावो है इस टीम के पास, रविंद्र जडेजा है इस टीम के पास, मोइन अली है, और इनको अब शिवम दुबे और ड्वेन प्रेटोरियस भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक इस टीम के पास एक्सपीरियंस और इस टीम के पास एक ऑल राउंड पैकेजेस काफी ज्यादा हैं। कॉनवॉय विल परफॉर्म वेल, शिखर अग्रवाल, लेकिन आप कॉनवॉय को कैसे खिलाएंगे? इंटरनेशनल खिलाड़ियों की भीड़ मची हुई है, मोइन अली है, ब्रावो है, कॉनवे है, सेंटर है, एडम मिलन है, किसकी जगह आप खिलाएंगे? मोइन अली का आई एम नॉट श्योर मैंने नाम लिया है कि नहीं लिया। सो इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी 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 डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। और दीपक चाहर, जिनको 14 करोड़ का परचेस किया था, अंधे पैसे लगा दिए थे कि चाहिए ही चाहिए, हमें करना ही करना है दीपक चाहर, इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि वो इंजर हो गए, और उनकी इंजरी ऐसी है कि छोटी मोटी इंजरी नहीं है। वी रियली डोंट नो व्हेन ही इज गोइंग टू कम बैक, एंड वी रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ शेप ही इज गोइंग टू बी इन व्हेन ही कम्स बैक। तो और कितने लंबे टाइम के लिए, मैं मेजॉरिटी ऑफ द चंक इस आईपीएल का मिस तो करने वाले हैं दीपक चाहर, और जब आएंगे भी दीपक चाहर, तो किस फॉर्म में, किस शेप में होंगे, किस तरह का महसूस कर रहे होंगे, इसका हमें पता नहीं है। सो ये बहुत बड़ा सेट बैक होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और इस टीम के पास राजवर्धन हंगारेकर भी हैं, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, तो उनमें हमने एक आध दफा पहले डिस्कशन की भी है। सुनने में आया कि कमाल के प्लेयर हैं, जितने हमने भी देखी है उसमें से भी अच्छे लग रहे हैं, बॉलर भी काफी कमाल के हैं, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। 1.5 करोड़ के चेन्नई ने इनको खरीदा है। सो हो सकता है कि ये किसी ना किसी तरह कोशिश करें उनके बूट्स फिल करने की, दीपक चाहर के। यू गाइस, अब टीम अच्छी लग रही है, टीम पे नजर डालते हैं पूरी टीम पर। रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, मोइन अली, ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उत्तपा, ड्वेन ब्रावो, अंबटी रायुडू, दीपक चाहर, केएम आसिफ, तुषार देशपांडे, इवान कॉनवे, ड्वेन प्रेटोरियस, मिच सेन, एडम मिलन, शुभ्रांशु सेनापति, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सी हरि निशांत, एन जगदीशान, क्रिस जॉर्डन, के भगत वर्मा। सो ये आपकी पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की लाइन अप है। इसमें से कुछ प्लेयर्स जैसे कि मोइन अली देर से आएंगे, हमें पता चला है कि एटलीस्ट पहला मैच वो मिस कर देंगे, क्योंकि उनको कोई हंगारकर एक सुपरस्टार इन द मेकिंग है। यस, वी वांट टू सी, एंड आई थिंक देयर इज नो बेटर चांस फॉर हिम टू स्टेप अप एंड शो हिज वर्थ देन दिस, क्योंकि दीपक चाहर, द बैकबोन, द परफॉर्मर, the go-to man of MHD or of Chennai Super Kings is unavailable because of an injury for we don't know how long. So उसके चलते के लिए राजवर्धन हंगारेकर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टेप अप करें और अपनी फैक्टर, राजवर्धन एक्स फैक्टर आई थिंक कहना चाह रहे हैं, हाँ जी, एक्स फैक्टर होने वाले हैं हंगारेकर के। बस 6 हंगारेकर को सिर्फ 6 मारने नहीं आते हैं, ये मत बोलो बॉयज। हंगारेकर की बॉलिंग भी कमाल की है, बहुत वर्सेटाइल अच्छा प्लेयर है। नॉट टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, जितना ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन जितना देखा लगता है बहुत अच्छा। अच्छा गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि स्ट्रीम को साथ लाइक भी करते रहे, हमें कुछ ही देर में गेस्ट ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए आई हैव टू रियली हरी अप। स्ट्रेंथ्स की बात करें, अगर चेन्नई किंग्स की स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो आपको पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को आप लोग डैडीज आर्मी कहते थे, कई लोग कहते थे बूढ़ों की ये पलटन है, इसमें सारे एजिंग खिलाड़ी हैं, तो वो अभी भी इतनी ज्यादा चीज इतनी चेंज नहीं है, बट इट्स ट्रांसलेटिंग इनटू समथिंग पॉजिटिव। एक्सपीरियंस इस टीम के पास बहुत ज्यादा है, और इस एक्सपीरियंस को आप मोर ऑफन देन नॉट आप इसको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हो। एक्सपीरियंस खिलाड़ी ना अंडर प्रेशर आते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को अंडर प्रेशर पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना।
और कंपेयर टू ऑफ कोर्स समटाइम्स द यंग ब्लड, तो इस टीम के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस। ड्वेन ब्रावो टीम के पास है, रविंद्र जडेजा टीम के पास है, रॉबिन उथप्पा टीम के पास है, अंबती रायुडू टीम के पास है, मोइन अली भी टीम के पास है, मिच सेंटनर भी टीम के पास है, जिन्होंने काफी ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कलेक्टिवली वो पोजेस करते हैं, और ये सारा एक्सपीरियंस जो है ना नुचड़ के चेन्नई सुपर किंग्स की हेल्प करने वाला है इन दी अपकमिंग सीजन। और कई लोगों की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड और ये एक्सपीरियंस का फैक्टर और महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप का फैक्टर इवन इन दी एब्सेंस ऑफ दीपक चहार इतना पोर्टेंट है, इतना खतरनाक है कि ये किसी भी टीम को रन फॉर देयर मनी दे सकता है। यादव कैट्स मस्त है 11 में, जगह डिजर्व करता है बंदा। ओके फेयर इनफ। अच्छा, और एक और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ये इसकी टीम की स्ट्रेंथ ये है कि टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। एटलीस्ट अगर आप कोर की बात करें तो सेम कोर ही है इस टीम की। टीम ने बहुत ज्यादा अपने 8 खिलाड़ी कुछ रिटेन किए और कुछ बाय बैक कर लिए हैं, और कुछ वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लास्ट सीजन इनकी जीत में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। आपने ऋतुराज गायकवाड़ की कंट्रीब्यूशन सुपर किंग्स के लिए कितनी रही है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। और दो थोड़े से इंजरी प्रोन है, थोड़े से इश्यूज रहते हैं, बट एब्सोल्युटली अ ग्रेट बायबैक। देन देयर इज मोइन अली जो कि कोर रहे हैं, इस टीम का हिस्सा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, अगेन कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वी नॉट वेरी श्योर महेंद्र सिंह धोनी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक प्लेयर की जगह रोक कर बैठा हुआ है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है विद द बैट, बट द फैक्ट इज कि कोर का हिस्सा है। और यू नो फेमिलियर चीजें, फेमिलियर एरियाज, जाने पहचाने रास्ते हमें कहीं ना कहीं कंफर्ट पहुंचाते हैं, जो अच्छी चीज हो सकती है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दिस गेम। तो रॉबिन उथप्पा भी हैं, ड्वेन ब्रावो भी हैं, आप अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, दीपक चाहर भी हैं, जो अभी तो मिसिंग होंगे, लेकिन जब आएंगे तो ये टीम, जब आप इनको देखोगे ना दोबारा खेलते हुए इस सीजन में भी, तो आपको लगेगा कि यार ये तो वही टीम है। बोलिंग टीम है, विश्वदीप सिंह जी कैसे बोलेंगे, रविंद्र कुमार हाई गोइंग आउट टू यू। इस टीम के पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतने सारे मैच विनर्स हैं, इतने सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लास्ट सीजन चेन्नई के लिए इतना अच्छा किया था। तो डेफिनेटली क्रिक जैमर हैव बीन कमिंग एवरी डे, वेयर हैव यू बीन? डेफिनेटली ये टीम काफी ज्यादा खतरनाक टीम हो सकती है, काफी ट्रबल कर सकती है। गेस्ट अभी नहीं आएंगे, बोला था सेकंड हाफ में आएंगे, कोई के बाद गेस्ट आएंगे, सो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, लेट्स क्विकली मूव ऑन। और अब चेन्नई सुपर की थोड़ी सी वीकनेसेस देखते हैं। मीनवाइल यू गाइस डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। सबसे बड़ी वीकनेस चेन्नई सुपर किंग्स की क्या है? इस टीम के पास अब फाफ डुप्लेसी नहीं है। फाफ डुप्लेसी के कैसे कंट्रीब्यूशन रहे हैं, कितने रन्स बनाए हैं, किस स्ट्राइक रेट से खेले हैं, पावर प्ले का किस तरह फायदा उठाते थे, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ क्या क्या चमत्कारें करते थे, फ्लाइंग फाफ बन के कौन कौन से कैचेस बाउंड्री के पास नहीं पकड़ते थे। द लिस्ट इज एंडलेस। हाउ मच इज Chennai Super Kings going to miss Faf du Plessis? We don't know, but we definitely feel, I definitely feel चेन्नई सुपर किंग्स फाफ डुप्लेसी को बहुत ज्यादा मिस करने वाली है। और जिस बंदे को रिप्लेस किया है, कॉनवॉय, डेवन कॉनवॉय, कैन ही बी फाफ? कैन ही समवॉट ट्राई टू फिल इन हिज बूट्स? आई एम नॉट टू श्योर। आप लोग इस सवाल का जवाब खुद दें। कॉनवॉय की बात करें तो उनको T20 इंडिया में खेलने का, T20 इंटरनेशनल इंडिया में खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और कॉनवॉय अपना IPL का भी मेडन सीजन खेलने वाले हैं। जब आप इनको फाफ डुप्लेसी के साथ कंपेयर करते हैं, जो कितनी क्रिकेट इंडिया में खेल चुके हैं, जो कितने अरसे से IPL का हिस्सा, आपको लगता है इवन ये खुद बोलते हैं, पीपल लाइक ABD, पीपल लाइक ब्रावो, पीपल लाइक फाफ डुप्लेसी के इंडिया इज लाइक आवर सेकंड होम। इतना टाइम 2-2.5 महीने गुजार देते हैं जो IPL खेलने आते हैं, इंडियन टैलेंट को देखते हैं, ऑपोजिशन में अपनी टीम में देखते हैं उनको कैसे कैप्टन यूटिलाइज करें, तो दे नो द गेम एट द बैक ऑफ देयर हैंड लाइक नन अदर। डेवन कॉनवे विल बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक, ही विल टेक सम टाइम, और उनको कैसे मिक्स करना है, स्पेशली जब मोइन अली वापस आएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू did very well in the UAE। किसने बोला? ये शिखर अग्रवाल ने। मैंने आज ही बंदे को नोटिस किया और उसके स्टैट्स देखे, मस्त स्टैट्स हैं बिल्कुल। फाफ फैक्टर अनअवेलेबिलिटी विल बी नेगेटिव थिंग फॉर CSK। बिल्कुल फाफ अब नहीं है टीम के साथ, ये बहुत बड़ी वीकनेस होने वाली है। मेरी मानने बड़ी वीकनेस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फाफ डुप्लेसी की एब्सेंस ही होने वाली है। एक और बहुत बड़ी चेन्नई की परेशानी रहेगी, एक और बहुत बड़ा चेन्नई के लिए इशू रहेगा, और वो इशू ये है कि दीपक चाहर इंजर है। दीपक चाहर कब तक इंजर रहेंगे हमें नहीं पता इस चीज का, बट इतना अंदाजा लगाया जा रहा है, जितने भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दीपक चाहर
इसका आईपीएल का मेजर चंक एटलीस्ट पहला हाफ मिस कर देने वाले हैं। और जिस किस्म की इंजरी उनको है, जब आप उस किस्म की इंजरी से रिकवर होकर वापस भी आते हैं ना, तो आप अपने 100% फिट नहीं होते। अल्ट्रा नॉब, थैंक यू, प्लीज बी मॉडरेटिंग द कम्युनिटी, और आप लोग प्लीज साथ साथ लाइक भी करते रहो। तो दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ज्यादा मिस कर देने वाली है, और दीपक चाहर की रिप्लेसमेंट ढूंढना इस टीम के लिए आसान होने वाला नहीं है। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मैं आज कोट करूं इरफान पठान को, जो कि कहते हैं कि दीपक चाहर, it's not easy for CSK to find Deepak Chahar's replacement. Without a doubt, we believe you. और जिस तरह दीपक की कंट्रीब्यूशन चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में रही है विद द बॉल, आकर परफॉर्म करते हैं, विकेट्स लेते हैं, रन्स रोकते हैं, और कौन करता है, मतलब बहुत कम ऑप्शंस और इस तरह की हैं। बैट के साथ भी रीडिस्कवर, इनफैक्ट इन्वेंट किया है शायद चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड ने ही उनके बैटिंग एबिलिटीज को इन्वेंट किया, ऊपर उनको आने का चांस दिया, उनको लाइसेंस दिया, और दीपक चाहर ने बताया कि मैं ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेता हूँ। तो बिल्कुल इरफान पठान का कहना ठीक है, कौन करेगा इनका सर्वाइवल, एग्जैक्टली चाहर कैन बैट, और ठाकुर भी नहीं है, तो अब तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाली है। शार्दुल ठाकुर isn't there as well, कहते हैं इरफान पठान। So you need to make sure that you find a replacement. अच्छा, अब इरफान पठान ने भी बहुत ज्यादा हंगारेकर को अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा प्रेस किया है। You know he is a fantastic young talent. If a young guy comes into the team, I might be a bit more worried, but they have MS Dhoni as a leader, the captain behind the stumps, and that makes things a lot easier for the younger guys. So I feel they nearly found some sort of replacement. दीपक चाहर की रिप्लेसमेंट हंगारेकर हो सकता है या नहीं, एटलीस्ट जब तक दीपक चाहर नहीं आती, एक वॉलंटरी चीज तो ये नहीं करेंगे, खुशी खुशी तो नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है दिस कैन वेरी मच ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। तो बट डेफिनेटली मेरे ख्याल से द फैक्ट दैट दीपक चाहर इंजर्ड है और उस टीम के साथ नहीं है, ये बहुत बड़ी वीकनेस बनकर आ जाने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगर आप दीपक चाहर की बात करें ना, तो दीपक चाहर ने 2019 से लेके अपना लास्ट सीजन तक 32 विकेट्स लिए हैं इन द पावर प्ले। सो मतलब दीपक इज दीपक का कोई कंपैरिजन नहीं है। would want to look for replacement, they would want to look for options, but they will probably not be another Deepak Chahar, at least in this season. अच्छा, एक और वीकनेस अगर चेन्नई सुपर किंग्स के हम स्क्वाड की बात करें, तो एक थोड़ी सी वीकनेस है डेथ बॉलिंग। अब इस टीम के पास मेरे पुराने शहजादे क्रिस जॉर्डन भी हैं, तुषार देशपांडे भी हैं इस टीम के पास, और इवन ड्वेन ब्रावो टू लार्ज एक्सटेंट है। लेकिन आप जानते हो कि चेन्नई, ये जो क्रिस जॉर्डन है, इनको हमने देखा है अक्सर पंजाब के लिए खेलते हुए कितने रन्स पड़ जाते थे। दे आर सेंट टू द क्लीनर्स, इवन ड्वेन ब्रावो कैन बी सेंट टू द क्लीनर्स। तो उस तरह का एक रिलायबल जो डेथ बॉलर होता है कि आएगा और संभाल लेगा डेथ ओवर्स में, वो इस टीम के पास थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है। डेथ बॉलिंग इनकी एक कॉज ऑफ कंसर्न होगी। डेथ बॉलिंग एम्प्टी है। शिखर अग्रवाल हालांकि other people think he's a good death bowler, but I think it will be a little bit difficult. और जो तुषार देशपांडे वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रह चुके हैं, अगर आप उनकी बात करें, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेथ में आके बॉलिंग भी की हुई है, लेकिन यंग है, थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड है। हो सकता है कि ये भी एक्सपेंसिव हो, और कभी जो ज्यादा, आपको पता है चेन्नई सुपर किंग्स कितनी ज्यादा प्रेशर मैचेस खेलती है और कितनी ज्यादा गेम आखिरी ओवर्स में जाती है, तो उस तरह की सिचुएशन में तुषार देशपांडे कैसे मैनेज करेंगे, ये थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है बिग लॉस सीएसके चाहर। जी हाँ, वो पंजाब के पास आ गया राहुल चाहर, दीपक चाहर। चेन्नई सुपर किंग्स का लॉस होपफुली पंजाब किंग्स का गेन होने वाला है मेरे ख्याल से। और एक और डिपार्टमेंट जो मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का, ये आप लोग बताएं, बल्कि कि इनके पास ठीक है मोइन अली भी है, रविंद्र जडेजा भी है, स्पिन डिपार्टमेंट इज लुकिंग ऑल राइट, और एक और स्पिनर भी आई थिंक इंडियन। लेग स्पिनर कौन है, लेगी कौन सा इनके पास है, गो टू लेगी जो इनके लिए आएगा, गुगली कराएगा, बैम्बूजल करेगा बैट्समैन को और विकेट ले लेगा, कौन सा लेग स्पिनर है? मुश्किल है बस इनके लेग स्पिनर। प्रशांत सोलंकी के क्या एक्सपीरियंस नहीं है, आई थिंक सिर्फ एक ही शायद उन्होंने गेम खेली हुई फर्स्ट क्लास की। 22 साल के लड़के हैं ये प्रशांत सोलंकी हाँ, सर्वाइवर भी प्रशांत सोलंकी, किंग बाबर भी सोलंकी कह रहे हैं। But you guys let me know, what do you think of this Solanki, Prashant Solanki? Do you think he's a good fit? Do you think he's a like? Talking about leggies,
महाराज जी, मैं लकी की बात कर रही हूँ। सोलंकी क्रिकेट, और तुमने मेरे से ज्यादा उनको खेलते हुए देखा है, तो क्या एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि बचा सकते हैं? मोइन अली इज ऑफी, महेश इज मिस्ट्री, सर्वाइवर कहते हैं। He's a newcomer. So थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि it will be a little bit cause of a concern. एक डेथ बॉलिंग और एक स्पिन लेग बॉलिंग थोड़ी सी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थोड़ा सा हो सकता है मसला, या एक इशू का बायस बन सकता है। अब अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस टीम के पास कुछ प्लेयर्स में, कुछ एस्टैब्लिश प्लेयर्स में, कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स में अपॉर्चुनिटीज हैं विदाउट अ डाउट। ऋतुराज गायकवाड़ ने हमें लास्ट सीजन इतना इम्प्रेस किया था, इतना इम्प्रेस किया था, मतलब इवन अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्टर नहीं भी हो तब भी Moin Ali is not available and Chahar also not available for starting matches. It's a big setback. Satwik ji, it's a very big setback. क्योंकि 5-7 मिनट रुक गए, हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे सत्विक जी, और जिनके पास भी क्वेश्चंस हैं अभी लास्ट ज्वाइन करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स के एक्सपर्ट हैं। तो चेन्नई क्वेश्चंस हम तब लेंगे आपसे, ठीक है। फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ की मैंने बात की है कि जबरदस्त एक परफॉर्मर रहे हैं पास्ट में भी चेन्नई के लिए, लास्ट सीजन की अगर बात करें, और इनके पास, गायकवाड़ के पास अब अपने आप को मजीद प्रूव करने का एक मौका है। सिलेक्टर्स के दरवाजे पर खटखटाने का मौका है, वर्ल्ड कप का ईयर है, और सीरीज भी इंडिया के पास आ रही है, गेस्ट आ चुके हैं अपने, तो और ये गोल्डन चांस है ऋतुराज गायकवाड़ के पास, ये गोल्डन चांस है शिवम दुबे के पास कि जाए अच्छा परफॉर्म करें, सिलेक्टर्स को इम्प्रेस करें और अपनी जगह बनाए। और एक और खिलाड़ी है एन जगदेसान और तुषार देशपांडे की बात हम कर चुके हैं, दोनों मान कैप्टन, लेकिन इनके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने ये जगदेसान, हम लोगों ने किसके अगेंस्ट खेलते हुए देखा है इनको पास्ट में, इनके पास भी खैर अच्छी अपॉर्चुनिटी। जगदेसान जो है, अगर कभी ऋतुराज गायकवाड़ को सिट आउट करना पड़ता है तो ये उनकी जगह आ सकते हैं। और अगर आप तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2021 की बात करें तो ही वाज द थर्ड हाईएस्ट रन गेटर। सो व्हेन और इफ Gaikwad needs to be rested, if he sits out, then Jagdisan has a very good opportunity to come, impress, make his way, make his place permanent. और इसी तरह निशांत जो लेफ्ट हैंडेड बैटर है, मेरा ख्याल टॉप पर आकर बैट करते हैं, उनके लिए भी, वो भी मेरा ख्याल तमिलनाडु प्रीमियर लीग में हाईएस्ट रन स्कोरर रह चुके 2021 में, उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है। और साथ ही साथ हमने हंगारेकर की बात की है, आई थिंक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हंगारेकर के लिए है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी फ्रेंचाइज, इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, 4 बार टाइटल जीती हुई है इस फ्रेंचाइज ने, महेंद्र सिंह धोनी जैसा मास्टरमाइंड, ऐसा लीडर, वैसा कैप्टन बैठा हुआ है इनके पास, तो हंगारेकर स्पेशली दीपक चहर के एब्सेंस में अपनी जगह बना सकता है, महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकता है। और महेंद्र सिंह धोनी, इनफैक्ट उनको सीखने की जरूरत क्या है, महेंद्र सिंह धोनी खुद ही उनको अपने परों के अंदर लेके, अपनी छत्र छाया के अंदर लेके इतना ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं कि वो अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। और इनफैक्ट एट एन इंडिया लेवल आल्सो ही हैज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग वेल, ठीक है। उन्होंने अपनी सीम बॉलिंग से भी इंप्रेस किया, हार्ड हिटिंग से भी इंप्रेस किया अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आए। और मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, उनकी हम बात कर चुके हैं, सिमरनजीत सिंह और के मासिफ, इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो इंडियन खिलाड़ी है ना, इनके पास अपॉर्चुनिटीज इसलिए रहेंगे क्योंकि आपके पास जब मोइन अली आएंगे तो सिर्फ 4 इंटरनेशनल प्लेयर खिलाने की आपके पास जगह रहेगी, सही है। और अगर हम बात करते हैं इस टीम की थ्रेड्स की, मेरे गेस्ट आ चुके हैं तो मैं आई रियली हैव टू हरी अप। थ्रेड्स की बात करें तो कौन कौन से फॉरेन खिलाड़ी को खिलाएंगे, स्पेशली जब मोइन अली आएंगे, कॉनवे को, ब्रावो को, इसको उसको क्रिस जॉर्डन को, ड्वेन प्रेटोरियस को, सेंटनर को, काफी सारे इसमें फॉरेन खिलाड़ी है ना, तो उनको खिलाना, अपने 4 ओवरसीज को फाइनल करना, दिस विल बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम और अ बिट ऑफ अ थ्रेट, स्पेशली व्हेन मोइन अली कम्स। मोइन अली और ड्वेन ब्रावो तो खेलेंगे मोस्ट लाइकली, ठीक है। उसके बाद जॉश हेजलवुड को मिस करने वाली है चेन्नई की टीम, और जॉश हेजलवुड की जगह किसको लाया गया, क्रिस जॉर्डन को लाया गया, तो क्रिस जॉर्डन भी मोस्ट लाइकली हमें खेलते हुए नजर आएंगे। फिर हमारे पास सिर्फ एक, अगर ये 3 स्पॉट्स कवर हो गए हैं तो डिवॉन कॉनवे, ड्वेन प्रेटोरियस एंड मिच सेंटनर। अब इन तीनों में से आप किसको खिलाएंगे? कॉनवॉय को खिलाते हैं तो ओपन कौन करेगा? गायकवाड़ और दूसरा इंडियन उत्तपा मोस्ट लाइकली, है ना।
तो फॉरेनर्स का, इतने ज्यादा फॉरेनर्स का होना थोड़ा सा एक दिक्कत का इशू बन जाने वाला है। कॉनवॉय ने इंटरनेशनल लेवल पे तो इम्प्रेस किया है, मोस्ट लाइकली क्योंकि मोइन अली जब नहीं होंगे तो कॉनवॉय ही खेलेंगे, गायकवाड के साथ ओपन करेंगे, तब तक पता चल जाएगा कि कॉनवॉय कितने पानी में उनको खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। एक और थ्रेट जो इसके टीम के पास है वो एज का थ्रेट है। एज का थ्रेट इस तरह है कि सारे थोड़े से एजिंग खिलाड़ी हैं तो इंजरी प्रोन होते हैं। ड्वेन ब्रावो की भी अगर आप बात करें, इवन धोनी की बात करें, तो उस तरह एकदम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और थोड़े से इंजरी प्रोन भी है। तो और एक एज का ही फैक्टर अगर डिस्कस करें, उसको आगे लेकर जाए, तो आपने जो टीम्स बनाए ना मेगा ऑक्शन में, ये टीम्स ऐसे बनाए जो 2-3 साल तक आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जो ये एजिंग टीम है, जिस तरह इमरान ताहिर लास्ट सीजन इस टीम का हिस्सा थे, इस सीजन इस टीम का हिस्सा नहीं है बिकॉज प्रोबेबली इज एज। अब आप एमएसडी की भी बात करते हैं या आप रॉबिन उत्तपा की बात करते हैं, बती रायुडू की बात करते हैं, ड्वेन ब्रावो की बात करते हैं, इवन मोइन अली टू लार्ज एक्सटेंट बात करते हैं, तो ये लंबे रेस के घोड़े जिनको कहती है ना, ये वो नहीं है। तो ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होने वाली है। और एक और जो थ्रेट है वो ये है थ्रेट कि जो चाहर की एब्सेंस है ना, दीपक चाहर की, वो इनके प्लेइंग 11 को बहुत बैडली इंपैक्ट करने वाली है। कैसे प्लेइंग 11 को ये लेकर चलेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों का इशू भी, ऊपर से दीपक चाहर भी नहीं है, तो इनको ये डिलेमा होने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ी बात। क्योंकि सिर्फ पावर प्ले में इनकी बॉलिंग हर्ट नहीं होगी, इनको पेस अटैक भी जो ओवरऑल इनकी होगी ना, वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होगी। अगर चार को तुषार देश पांडे या के एम आसिफ रिप्लेस करते हैं, तब आई थिंक टीम ओवर रिलाय करेगी कहीं ना कहीं एडम मिल्न पे या ड्वेन ब्रावो पे। दैट विल बी अ बिट प्रॉब्लमैटिक। और अगर क्रिस जॉर्डन के साथ जाते हैं, फिर भी इनके लिए इशू होने वाला है। क्रिस जॉर्डन के साथ तो मोस्ट लाइकली जाएंगे, लेकिन मतलब इनको, इनके लिए एक डिलेमा बन जाने वाला है प्लेइंग 11 का, अगर दीपक चाहर की जो एब्सेंस है वो ज्यादा लंबे देर तक कंटिन्यू करती है। I want to welcome my guest, Abhilash. Abhilash, are you with us? Hi, Bisma. How are you? Hi, Abhilash. How are you? Good to see you. Welcome to the channel. Good to see you too. It's been a while. I have to just turn my volume up a little bit. Guys, bear with me while I do that. Abhilash, can you start? Can you try speaking now, because you will? I wasn't able to hear you. Hi, how are you? Firstly, Good. Thank you so much, Abhilash. Good to see you after such a long time. yeah, How same have here. you been? All good, inshallah. Avinash, I've introduced you as like the biggest fan of Chennai Super Kings, and I said some of his friends call him the encyclopedia when it comes to Chennai. So I think some people have their questions ready for you. Are you happy? First of all, tell me, are you happy with how this team looks? Chennai Super Kings, they're missing Suresh Raina, they're missing Faf Duplessis. They have managed to somewhat retain the main core. They've managed to buy back some. They had some retentions. But overall, are you happy with the way this team looks? Overall, yes. Like, if I have to split the two auction days, first day was in MSD style, bringing the core back. And if you see the first day picks, he managed to get 8 of the 11 players who played the final, which would not be seen. अगर आप बाकी टीम को देखेंगे तो you will not able to see that 50% of the playing 11 played the have been bought back. So that's a big positive. Yes, we badly miss Faf though. He's been a rock or like linchpin. अगर फील्डिंग की बात करें तो हर दफा लॉन्ग ऑफ में उनका फ्लाइंग फाफ, मतलब आप लोग तो उसके नाम का ही आप लोगों ने फ्लाइंग फाफ रखा हुआ था, बिकॉज ही वाज सो डैम गुड इन द फील्ड। बैटिंग अगर भूल भी जाए तो ऐसे कमाल की फील्डर, लिटरली बी सो गुड एंड विन सीएसके मैचेस। मतलब डेथ में तो he saves that crucial 10-15 run which could tilt the game into the opponents. So we are going to badly miss him with the bat as well as in the field. And same thing with Lord. मतलब शार्दुल ठाकुर तो 2-3 साल से has been taking wickets like चीट कोड जैसे जब आते हैं विकेट लेते हैं ऐसे ही comes and like हाँ मेरे को 2 विकेट. So we are going to badly miss him. Then Josh Hazelwood. I mean, Dubai leg में dominate
the reason CSK dominated was uska wo jo hard hit the ball, hit the deck wala scenes. So yeah, like it's a hard luck, but Avinash, overall you've taken everyone's name, but you haven't mentioned Suresh Raina in the same sentence. Are you happy that he's no more a part of CSK? Suresh Raina again, like yeah, he has been a big linchpin, but again, if you have to see his numbers, it's not been that great. Of Post late. 29, off Hmm. late has not been that great. Yes, sentimentally, yes, you're gonna miss him, but if you have to speak in hard facts, then I mean, the best decision the CSK management took is to leave him out. Hmm. अगर अगर उनका दो दो पर आईपीएल फैंस तो अभिलाष बड़े गुस्सा थे सोशल मीडिया पे कितने दिन ये तो ट्रेंड कर रहा था कि हाउ कैन यू लीव मिस्टर आईपीएल आउट ही इज डन सो मच फॉर द टीम और जिस तरह की ये टीम है ना टीम की अपनी फिलॉसफीज भी इफ यू गो बैक द टीम्स ओन फिलॉसफीज they like to invest in emotions. The fact that Mahendra Singh Dhoni is still very much a part of the team, even though he doesn't really do much with the bat, goes on to explain कि ये team emotions में invest करती है, fans के emotions हो या team का sentiment हो, उसके चलते सुरेश रैना को completely ignore करना, you think it still is a good decision? it's a good decision. Again at the end of the day, fields में तो numbers matter, numbers और stats ही matter होते हैं. तो if you take 2019, he didn't have a good returns. 258 or 300 runs he scored किया था, which is under par if you take Suresh Raina, the IPL beast. The comeback season में तो भी he scored around 400 runs, but 2019 and 21 में he started good, but teams found out that he still not worked on his weakness. So अगर आप weakness आजकल if you don't work on your weakness, you Gone, don't get, especially in this kind of a format. बिल्कुल. you don't get a long rope as like, because people want results, they don't look into emotions these days. And CSK को भी देखेंगे तो 2020 में because of their reliance on emotions costed that season. 2021 में they completely came back with a new strategy. Like if you had asked anybody, like कौन 2021 में जीतेगा, तो they would have told MI or other teams, but CSK came back with a point to prove, like we still are the champs, we still are the team to watch out in the field. And Dhoni built an amazing squad. The reason, another thing is, like अगर आप playing 11 देखेंगे तो 10 people, like 10 out of the 11 can bat. I mean, Yeah, batting goes the very, very, mouth-watering very. prospect as compared to having a 7 or 8 people batting. Abhilash, आपने अच्छी चीज mention की. I think I forgot to mention this in my. We were discussing strengths and weaknesses and opportunities and threats of Chennai. I think जो इनका batting lineup है ना, I think it goes as down as like you rightly said. इतनी batting है. आपके पास opening में भी अच्छे options भी हैं. अगर आप experiment भी करते हो, आपके पास Gaikwad है, who was so brilliant last season. There's Devon Conway. We're not sure when Moeen Ali comes back if he'll have a lot of game time or not, but at least he's there. फिर मिडिल में आपके पास अंबती रायुडू है, who's been doing well time and again, season after season for Chennai. There's Robin Uthappa, there's Moeen Ali, जो मुझे लगता है कि इतने versatile player है कि आप उनके numbers के साथ भी खेल सकते हो. You want to send him to open, you want to send him in the middle, he goes and he does the job. Then there's Mahendra Singh Dhoni, there's Bravo, there's Jadeja that I would actually love to see a little bit up the order because he's doing so well. Then there's Shivam Dubey also. तो बैटिंग इतनी ज्यादा इस टीम के पास है. Do you think it is probably one of the biggest strengths of this Chennai side? I mean, yeah, like if you have to build us, if I give you if I'm the owner and I ask you to build a team, wouldn't you want to do the same? वैसे ही है ना, like I've been given a choice to play. I would love to have options. अगर एक नहीं करेंगे तो दूसरा मेरे को बेल आउट करेगा. मतलब if Jordan has a bad day, I can go to a Dubey. He may not be giving the returns, but at the end of the day, I can subside his leakage. अगर दो ओवर में 30 रन खाया तो at least Dubey can limit the damage by at least conceding 20 runs in his 2 overs. So I can offset his quota. So that way the team has been built well. Like and also if you have to go by last year's numbers, the team has got a brilliant set of players, like left and right hand combination. That combination is also very good, no doubt. So like
वो स्पिनर्स का मैचअप है ना, इट लाइक इफ यू सेंड बिकॉज आजकल व्रिस्पिन के ना लाइक it's so dominant these days that you send in a left hander and you can make use of that unfavorable matchup. And by numbers, CSK had a very good middle overs run rate as compared to other teams in the last season. So because the team composition is made in such a way that you have a top of the order who could play the pace, and down the order you have spin bashers who could bash the spinners, and death mein to you have Dhoni and Jadeja who could Dhoni again old Finish it, yeah. Dhoni again. I'm not uh, pinning too much hopes because again he still has his weakness, but I would be happy if he can contribute like 18 of 6 वैसे किया qualifier 1 में last like हाँ. एक और 2 matches ऐसे खेले तो I will be happy. 50 I मेरे think को उसी का वही रोल रहेगा कि he will just come और maybe पूरे टूर्नामेंट में एक या दो बार कुछ मैच सेविंग परफॉर्मेंसेस देगा, but he's there to lead the team, and I definitely think he's still one of the finest leaders that we have in this IPL setup. अच्छा, you talked about absolutely to spin back your and point. definitely how. Absolutely to Sorry, back go your on. point as the captain. Like I happened to see the final last year in Dubai, and the one thing stood out for me was the way he matlab, the way he diffused Venkatesh Iyer the threat. Matlab KKR, if they made it to the finals is because of Venkatesh Iyer. Or like he just took his offside out of equation. Matlab, Hmm. I mean, his tactics is still notch higher than the other captains. Yeah, yeah. Okay, okay, the titles do not And speak. I was reading somewhere today, Abhilash, there was some cricket expert who was saying you might as well bench two good players and have one good leader. So I think that is Chennai's philosophy. Abhilash, you also spoke about the spin department, of course, which is relying quite a bit on Moeen and of course Ravindra Jadeja. But अगर leg spin की बात करें तो इनके पास उस तरह का कोई experienced या go to leg spinner नहीं है जो bamboozle कर दे बैट्समैन को और गुगली मार के कंट्रोल वापस. There is Prashant Solanki, but not very experienced. Do you think this probably is one area of weakness for Chennai? Yeah, like if I had to look into the squad, matlab, if I had to like MS Dhoni, if you take him as a leader, like he likes to play with spin as compared to pace. I mean, if you see the last two IPL, like this IPL's team, because the game has not started, but if you see the last season and this season's setup, I feel he has changed the philosophy. Matlab, he's gone into investing on pace as compared to spin. I feel Hmm. there was one point in time where like he used to like first 6 overs. It does not matter if agar team 60 70 runs there, so he knows to bring the game back with the spinners. And also if also he's not a big fan of leg spin, if I'm right. Hardly has used wrist spin. He makes sure like he's a captain who likes his finger spin to do the damage as compared to the Hmm. wrist. But Hmm. but in the current cricket, lack of wrist spin option is a big concern for me if I have to look Hmm. into the setup. Like Prashant Hmm. Solanki, they have invested in him, but Hmm. again, going forward only we can see whether वो Yeah, how return capable he is. क्या. There's a comment or a question by World of Sports. He's saying CSK will struggle in the middle order. Dhoni, Rayudu, Bravo, they have passed their peak. Can't expect them to come and start delivering from the word go. Because we saw this a couple of seasons earlier also that some of these players were a little rusty, so to speak. I think that's what he's referring to. Do you think that can be a bit of a concern? Rust, yeah, Rust does play a big role, but again, you're playing in Mumbai. That Hmm. is a that is a big thing. People don't realize. पहले पहले दो तीन half, like the first half will be road. मतलब you will be literally Hmm. playing on a road. Ball Hmm. bat में आएगा and then you're just gonna hit from ball one. Hmm. Rust will be there, but again, as time goes by, people will find their groove. I So you feel. think middle order will be fine? We have Bravo, Yeah, you middle have order will be fine, but Rayudu. except like Hmm. if he had raised the question on Dhoni, yes, I would have said yes. But Hmm. Raidu is a brilliant player of spin, so I
unless until the team is in trouble, maybe I would see, ki, Rust would play a big role. But अच्छा, Raidu and Bravo, Jishnu Banerjee wants to know if Conway should open. कॉन्वॉय की इंक्लूजन पे कोई क्वेश्चन मार्क्स इससे लगे हैं क्योंकि आपके पास इतने सारे फॉरेनर्स हैं. यू प्ले मोइन, यू प्ले ब्रावो, यू प्ले सेंटनर, यू प्ले हु एल्स वुड यू प्ले? कॉन्वॉय को खिलाओगे या क्रिस जॉर्डन को खिलाओगे? So, but my for now, for the sake of this question by Jinshu Banerjee, would you play or should you play Devon Conway? my potential four foreigners would be Conway, Moeen Ali, Bravo, and Milne. Because अच्छा, no Conway, Chris Jordan. I wouldn't play Chris Jordan at the start. Okay, so Current डेथ बॉलिंग का form is- इशू आ रहा है. डेथ बॉलिंग वीक लग रही है वैसे ही इस टीम की. How will you answer that question or that I mean, concern? Bravo तो पिछले IPL में तो he did really well. But Bravo with the cleaners many times also, na Vilash? Yes, but if you look at his numbers, he has a very good Yorker delivery, Yorker accuracy rate as compared to Jordan, whose biggest strength is Yorkers. हाँ, Jordan is similar, no, without a doubt. But if you take his ER, Bravo's There's economic Tushar Deshpande in the mix also. He's bowled in the death for Delhi Capitals. You think he could probably be used also? I think they might, if Dhoni prefers familiarity, then he would rather play KM Asif over हाँ, Deshpande. or KM Asif for that matter. Maybe, but again, you would have to wait for the first 3 or 4 games to really decide what's going to be the playing 11 which Dhoni would use consistently throughout. अच्छा, Because Vilash, absence before of we Deepak proceed, Chahar. हाँ, एक बहुत बड़ा इशू दीपक चाहर का आ रहा है and nobody knows how long he's gone for and nobody knows when he comes back what kind of a shape, what kind of a level of fitness or form he'll have. So how it's of course without a doubt it's a no brainer कि इतना haunt करने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स को उनकी absence. There are a couple of people कार्यकर की जैसे हम पहले बात कर रहे थे जो शायद थोड़ा सा स्टेप अप कर रहे हैं. They may try to somewhat fill the role or fit the boots of चाहर. लेकिन मुझे लगता है कि उनके एब्सेंस में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ज्यादा मसले क्रिएट हो जाने वाले हैं. What do you have to say to that? Deepak Chahar, yes. I mean, 50 plus wickets if you take from 2018 to the last IPL. I mean, he has won games for CSK in the power play. CSK is going to badly miss him. And also, ऑफ लेट बैटिंग में भी तो बंदे प्रूव कर रहा है. सो और आई थिंक चेन्नई ने उसको वो चांस दिया कि बैटिंग में उसको थोड़ा प्रमोट भी किया, उसको लाइसेंस भी दिया. चेन्नई ने लिटरली उसको रीइन्वेंट करवाया कि दिस इज हाउ यू कैन इवन डू इन बैटिंग. सो दे आर गोइंग टू मिस हिम अ लॉट. They are going to miss him a lot considering he is the only bowler. He and few bowlers managed to swing the Kukubura ball in the IPL. So Dhoni is a kind of a bowler who loves swing. Whenever he gets a bowler who could swing, he would take it. He would take them on his, take them on his, take him aside and give him the ball. So Dhoni will miss Chahar. But again, the bench strength के बात करेंगे तो वो भी ठीक ठाक है. You still have you can invest on Hunger Gaker. How do you rate Hunger Gaker? You saw him in the under 19. He does well with the ball. He has the potential of hitting some big runs, some big shots. To be frank, I was shocked. I was shocked when CSK placed the bid on Hunger Gaker. 8 crore, 1.5 crore. Why? You don't think he has the potential? Many experts are rating very highly. It's not about potential, because hardly you see CSK banking on youngsters. So yes, young blood. So when because IPL के पहले when I was looking at Twitter feeds, many people wanted Hunger Gaker. चाहे कुछ भी हो, Hunger Gaker CSK ना आए. And people were like, Hunger Gaker जाएगा तो भी Mumbai Indians, because Mumbai Indians love young talents. And when Hunger Gaker bid got finalized CSK, I was so happy, wow, Dhoni has seen the under 19 World Cup. And if you see the auction also, CSK did place some bids on the under 19 World Cup, which means that they do realize that we do need to look into the under 19s as well. Abhilash, that brings me to my other question before I forget. We see teams like Mumbai Indians who've invested heavily in future stars, in younger blood, who will
go on and maybe represent Mumbai Indians in the long run? Because isn't from the mega auction you're making plans for your coming 2 to 3 years? But when you look at Chennai Super Kings, like we earlier on we discussed the fact that it is an aging team. You have like how you guys said it's a daddy's army. So where do you see that going? मतलब हंगर लेकर एक बंदा है दो और youngsters हैं टीम के पास, but not very heavily have they invested in younger blood. Can that be a problem in the long run? See, again, the philosophy of CSK is live in the present. Matlab, uh, I mean, they believe in winning. Like there, if you see whenever the experts ask a question like, "What do you see in the team? What's your next goal?" Like, whatever happens, I need to qualify for the playoffs. And if I had to bring it back to PSL, like you have seen Peshawar Zalmi, have they invested in youth? No, right? They want to make sure that chahe kuch bhi ho, we need to go to playoffs. So I need a squad which can take me to the playoffs. Agar if it is our bad year, like then we would test some few youngsters and CSK did that and Rutraj Gaikwad was one such youngster. Deepak Chahar की बात करेंगे तो भी हाँ, इवन he शार्दुल was a ठाकुर की भी rookie. बात करें तो वो भी कंपैरेटिवली यंग है और उसको भी चेन्नई ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है. I think that was an interesting. Abhilash, so Cricket Talk wants to know. I mean, I don't want to get into ratings now. I want to talk to you first, but he wants to know on a scale of 1 to 10, how would you rate your team CSK? 1 being the best and 10 being the weakest. And he categorically said, for once, don't think of yourself as a CSK fan. So try to be neutral, keeping all the pros and cons in mind. I mean, with the squad I have, I would rather give, like, like one is the best, right? So I give three because Give it 3. because again at the end of the day, that's what like if there like I happened to see the a show in Crickbus where they got an official of CSK when they are when I think it was Gaurav Kapoor who asked the question to the person. I think it's Mr. Sundaraman. So he has a simple question like, where do you see this? Like how are you happy with the team? And he just said one point: you cannot you can only make teams in the auctions. You can only build a site for the auctions. At the end of the day, it's the captain and the team which takes to the desired result. So you see this team somewhere in the rankings of number 3. Many people are even rating them as the number 1 team. I mean, that's just for my own interest. Who would, if Chennai is number 3, then who is number 1 and number 2? Because I remember I did a blog in 2018 when CSK came with the strategy of buying all the old people, and I literally gave them 6 like 5.5 out of 10. I was like, this is one of the worst squad I've ever seen, except for the retentions. And then rest is history. Dhoni just punched everyone's face with the IPL trophy that year. He's a mastermind, and there's no, not even a room for comparison when you talk about Dhoni's style of leadership or his decision. But coming back to my question, I'm really keen on knowing who do you think is a little better than Chennai? So number 1 or number 2, कौन अभिलाष अगर number 3 Mumbai है तो sorry Chennai है तो. If on paper, I would say on paper Delhi looks good, Lucknow looks good, Punjab is looking good. Punjab looks good on paper. Thank God you said that. Punjab is my team. Punjab looks good on paper. I'm iffy about the usual suspect MI and CSK because MI I'm very iffy this time. Maybe in the long run, maybe they may prove all of us wrong because they do have unlimited resources and they think talent. But again, like you said, talent scout. I'll not be surprised if MI manages to shut the critics with the show. That's what I'm saying. That's what we're talking about. So, but I think Delhi is looking quite good. They were causing a bit of a mayhem in the auction also. सबके रंग में भांग मिला रहे थे दिल्ली वाले, but they managed to put together a good enough team. I mean, the spin department is not that great. Up if you take, I mean, if you look at the backups for Akshar Patel or Kuldeep, अगर दोनों को injury हो गया तो
who's there to lead the attack. Hmm. I mean, Alright, Abhilash, let's come back to Chennai Super Kings. उनका प्लेइंग 11 हमने जल्दी से डिस्कस करना है. अब मोइन अली नहीं रहेंगे तो हमारे पास थोड़े से इश्यूज कम रहेंगे. एटलीस्ट लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे. आप ओपन किससे कराओगे? Gaikwad and Convoy, Gaikwad or Uttapa, who would you go with? my potential first 11 for the first game would be uh, Conway and Rudraj to open. Uttapa at Utraj 3. Gaikwad, okay. 4 में रायडू, 5 में जडेजा. नहीं गो एक सेकंड. ऋतुराज गायकवाड, डेवन कॉनवे ओपन करेंगे. नंबर 3 पे कौन आएगा? Uttapa. ओके, उत्तपा आ गया. नंबर 4 पे रायडू, then 5 में जडेजा. ओके. 6 Then 6 MS. Depending on the situation, अगर डेथ में आ रहे तो I would place him higher. 7 में ब्रावो. Okay. 8 में I would debut Hunger Gaker because he gives me I would also. extra factor of pace which Yes. Chahar would not give me. Then 9 में तो I would go with Mill. Okay. 10 में because since Moin Ali is ruled out, I would rather go with Mahesh Tikshana. Okay. And 11 में तो I will go with Asif. KM Asif. So there is no Shivam Dubey in your team. I have Shivam Dubey. In fact, ahead of MSD, I would have him come and bat. क्योंकि वो थोड़ा सा बैटिंग भी कर लेते हैं. मेरी टीम में शिवम दुबे भी थे और क्योंकि डेथ का मुझे इशू लग रहा था तो मैंने क्रिस जॉर्डन भी डाला बिकॉज ही इज फ्रॉम पंजाब एंड एट टाइम्स ही डिड गेट हिज विकेट्स एट क्रूशियल मोमेंट्स एंड आई नो ही इज आल्सो capable of getting thrashed and giving away leaking many runs, but मैंने फिर भी क्रिस जॉर्डन को डाला था. So you don't have Chris Jordan, you don't have Shivam Dubey in your 11. Shivam Dubey, like Shivam Dubey, the problem with him is like I haven't seen him hit the balls towards the offside region. So and people do know his weakness. Matlab, people target his legs. He's not that a swift mover with his legs. If you see his batting, he's very good in clearing in the V region or straight. And he gives me, no doubt, he gives me overs with the ball, but I would rather go with this because again, I would try to squeeze some overs with spin of 8 overs. I mean, Tikshana can get me across through the power play. Three overs in the power play and 1 over in the middle. And Jadeja is there to squeeze the middle. Bravo at the death. Yeah, it's going to be question marks, but this would be my first. You got to take the risks. Yeah, no choice in that. And I would rather go with Tikshana because जब मोइन अली आ गया तो I would drop Tikshana. अच्छा, मोइन अली की खबर अभिलाष जी आ रही है. He's reaching Mumbai tomorrow. I think it's a breaking news shared by one viewers. So if he reaches Mumbai tomorrow, there's I believe a 3 days mandatory quarantine. So he anyways will miss the first match. Yeah, he's ruled out. But once Moin Ali आ गया तो I mean they would drop Tikshana for Moin Ali. And like the good thing with this team this time is like you've got too many options. अगर Conway नहीं किया तो you can still open with an Uttapa. अगर Uttapa is not giving the desired result, you can still go to an Hari Nishant or a Jagdishan and ask them to open. Yeah, वो इस team के पास even in their bench when you look at the kind of people they are sitting out, they're also good enough to come in and fill in some of these people in the playing 11. So the team looks good. Anyways, now आखिर में वही बात मैं आपसे पहले पूछना चाह रही थी, किसी ने पूछ रही थी कि how do you rate this team? Do you see them coming and playing? First of all, of course, making it to the playoffs, and secondly, playing another final, and thirdly, lifting the trophy another time for the 5th time? If I have to speak as a fan, I would tick all the 3 boxes. All 3 are possible. As a fan, if I have to, again, like it's too early to predict the playoffs. No doubt. This time it's 10 teams, not usually 8 teams. So you may not know who will spring surprises this time around because you have the level of competition. The bada ho raha hai. It's not like the usual suspects. Mumbai, Chennai Super Kings, RCB, Sunrisers, yeah, Rajasthan, yeah, Punjab, yeah, KKR. So
the level playing field this time is huge, so it's difficult to make the first call of choosing the four playoffs teams Mm. this time around, because Mm. everybody has built a decent enough squad. Actually, yeah, everyone has built a decent enough team. I mean, I do have my doubts on MI, probably because I don't know domestic cricket in India or some of these youngsters that well. I don't have my doubts on Sunrisers Hyderabad. Again, they have the potential of coming and surprising us all. और 10 टीम्स है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टक्कर का होने वाला है इसमें गेस करना कि कौन प्लेऑफ्स तक पहुंचेगा है डिफिकल्ट बट आई थिंक if you ask me who's a neutral person I think this Chennai team has the potential of at least reaching the playoffs. Yeah, if I had with the roster they have, yeah, like Yeah. good quality backup. Like in case agar Bravo ka if anything bad happens to Bravo, you can still play a Jordan or a Dwayne Pretorius. You got a solid That backup. yeah, backup बहुत अच्छा है. अच्छा, Shivam Dube is from Mumbai, says King Babar, and most of the matches are being played in Mumbai, so it could be advantageous for them to play him, perhaps. Shivam Dube की हम बात करते थे पहले भी. I mean, Angarkekar is from Maharashtra. Rutraj Okay. Gaikwad is from Maharashtra. So, I mean, if you look at the youngsters, not many know that they have bought 4 or 5 players from Maharashtra, the same region where the IPL is going to happen. So, I mean, talking about leg spinner Prashant Solanki is from Maharashtra. Shivam Dube, Hangarkekar, then Rutraj Gaikwad, Mukesh Chowdhury. I mean, 5 to 6 players are from Maharashtra itself, and then Hmm. Tushar Deshpande. Hmm. So team, if you have to play in Maharashtra, they can play all six. But again, it's the best. Hmm. You need to take the best 11 in the park, right? And Hmm. seeing Mumbai, the first half, you will see high run scoring because अच्छा. last season mein to people like especially when the IPL came to UAE back, you were not seeing a high contest with the ball and the bat. So people people do want to see bat on the ball. So they I would rather have insurance in the team. अगर किसी को uh, if somebody gets a hard day, then have another option to offset the bad link for that Hmm. day. Hmm. So in terms of CSK have done a good job of They've done a good job. You're happy by the way this team looks? yeah, like first day if you had asked me the question, I would have ranted on spending 14 crores on Deepak Chahar. Ah. But Didn't somehow know he was going to get injured. it's not about injury. Like I'm still at shock on how CSK spent 14 crores on Deepak Chahar. I wanted Punjab to really have Deepak because he really is your most valuable player. He comes and he contributes with the bat. कई बार अच्छे खासे रन छक्के चौके मार के बिल्कुल करीब ले जाते हैं मैच जीत लेता है चेन्नई के लिए फिर बॉल के साथ तो कितना बड़ा जीनियस है स्पेशली कीपिंग हिज रीसेंट फॉर्म फॉरगेट अबाउट हिज फिटनेस फॉर नाउ लेकिन जिस तरह की उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं इवन फॉर टीम इंडिया आई थिंक ही डिजर्व्स दैट 14 Yeah, करोड़ अगर 9 करोड़ आप राहुल को देख रहे हो और भी कुछ 10 11 12 करोड़ और लोगों को दे रहे हो इवन मुझे मुंबई का यंगस्टर है द 15 करोड़ गाय व्हाट्स हिज नेम Kishan. ईशान किशन या So Deepak Chahar brings more onto the table, don't you think? I His mean, 11 crore is somewhat if justified. if you have to talk, since you spoke about Ishan Kishan, another fact was Chennai and Mumbai are not used to buying players above 10 crore mark. Hmm. So this time they have broken the bank on getting the 2 players they wanted. So it does speak volumes that the competition again has competition has heated up. Agar you need someone, you really need to go and break the bank. Otherwise, Hmm. it's agar They were really doing that. They were adamant कि कुछ भी हो जाए. They just had their eyes on him and they made up their mind. और I think उसको पहले reassure भी कराया था कि we are going to let you go, but we will definitely buy you back in the auction. and तो उनको तो Chennai and लेना ही Mumbai था I was think. Chennai and Mumbai, like if you look at the bidding strategy, like Mumbai was off, but again they knew whom to buy, and I mean, who would have thought? Like people knew that Jofra Archer Mumbai to hi jayega. Hmm. But look at their squad. Even though they were the late starters,
They Yeah. managed to build a decent, like a brilliant batting and a bowling attack. Coming back to Chennai, first day was off, but I was happy with the fact that CSK got 14 or 15 players whom they knew, like the familiarity, which I don't think the other teams have. If you look at the other team's squad, they would rather have people who have played for past franchises than Hmm. people who have been at one particular franchise. So Hmm. Chennai have done a decent. Abhilash, I think one person wanted to know that why did CSK not pick Suresh Raina even when they had some money left in the purse towards the end? Why do you think that happened? Do you think it had something to do with the kind of a fallout Suresh had with whoever in 2020? that that that's still not out. But again, if that's the case, then CSK would have released Suresh Raina for the 2021 IPL. Yeah, They didn't. So they they didn't. backed the player. The player didn't deliver the returns. So he had to be Hmm. benched. So he had to be dropped. I Hmm. mean, if if a captain like Dhoni is dropping a player, that shows that you really need to up Hmm. your gas. People still talk about why Uthappa was bought back. Uthappa Hmm. worked his way out in the domestic circuit and delivered Hmm. on the big stage when CSK needed him to do that. अगर आप क्वालिफायर वन के बात करें तो अगर सीएसके जीता इट्स बिकॉज ऑफ उतप्पा एंड and the underrated knock in the finals, the way he took on Varun or Nareen. Agar had he not done that, CSK wouldn't have scored even 192 in Dubai. Hmm. Scoring 190 is not a easy thing in Dubai. Joke. Hmm. So so sentiments Yeah. aside, Hmm. CSK did a really good job of not banking. Not picking. Yeah, All right. At least one of the CSK fans is saying this because at the, everyone else looks. at the end of the day, you need to build a team. This is a mega auction. It's not like plugging the gaps for the next season, right? If he has a great, अच्छा बाबर अगर वो क्रिकेट टॉक जो भी है सॉरी अभिलाष गिव मी अ मिनट क्रिकेट टॉक अगर गुरकमल सिंह है भी क्रिकेट टॉक भी इट्स फाइन ये बैन थोड़ी लगाया है हमने चैनल से अगर ये आना चाहें तो ये आ सकते हैं और इन सबका चैनल है पब्लिक का चैनल है सो अगर ये है भी या नहीं भी है इट्स अप टू हिम इफ ही वांट्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी वी रिस्पेक्ट दैट हमारा इसमें से कोई लेना देना नहीं है और आप अभी श्योर भी नहीं हो ना और मतलब डोंट डू दिस लेट पीपल कम एंड लेट पीपल टॉक अच्छा अभिलाष रियली क्विकली फैक्टर प्लेयर आपके ख्याल से कौन सा ऐसा प्लेयर है not the usual suspect probably but someone who can come and do a great job for Chennai and save them bail them out of tricky situations your X factor player Devon Conway. ah I mean, he's been looked as a Favs not replacement. Aquaman no Top order no nobody batsman. else but not Hungarian but Devon Conway okay X Factor, like I would rather break your question into two halves: Indian X Factor and foreign X Factor. okay go Foreign on X let's just Factor do तो it मैं that way Devon Conway, because ठीक है he has a brilliant T20 record. अगर आप देखें तो he's done well for his Super Smash side back home for New Zealand. Hard scorer, and fits into the CSK ethos of start your base, then go bang bang. hmm. So Conway fits that scale of a CSK player. अगर आप CSK का openers देखें तो one stabilizer and one haul out attack वाले Hmm. batsmen. And Indian X Factor though, I'm really anxious to see how Hunger Gaker performs. Same here. After hearing so much about him and seeing glimpses of him, I'm also looking forward to seeing what he does. How much can he deliver? Yeah, the way he's also talking, the way he's talking, like I want to become like a Andre Russell, or Hmm. like you don't see like Indian players wanting to model on a West Indian factor these days, especially in the T20 circuit. unless you're a, unless you're a, what's his name? गुजरात का अपना कैप्टन एक तो मुझे नाम भूल जाते हैं. हार्दिक पांड्या. He Yeah, took a lot of inspiration from the West Indians. yeah, like Hardik Pandya, he's not like he's not been bowling these days, but again,
He's a class act with the bat. He can change the game with his hitting. There is a regular viewer. His name is Felix. Hi, Gagati Felix, and he's the biggest Rishabh Pant fan. And he constantly tells us one thing. He constantly makes one comment. King Pant is way, 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 way greater than Thala. Your comments on this, please. Abhilash, I know you are a Mahendra Singh Dhoni fan also. It's not about Mahendra Singh. Like you have to like, if someone comes and tells you that Mohammad Amir is a great bowler, then Wasim Akram, would you take it? I'll roll my eyes. You would say Wasim is greater than Amir, right? Of Like course. I was just giving like Pant is really going to do great things if I have to put it in. Uh, he will eventually break MS Dhoni's records for sure. I mean, बंदे गए foreign में गए and scoring hundreds, like it's like an easy pill to swallow. Easy thing, exactly. So he's really going to do wonders in the field. But again, MS you can't compare apples to oranges, right? At the start. So we need to. That's the problem with the people. Agar you should not compare Pant with Dhoni at this stage. I agree. That is Let a very let wrong him play for another comparison. 10 years. Look at what. Bilkul. Anything can happen. People are talking Hardik Pandya to agla Kapil Dev ho jayega. He's not bowling these days. But I really want him to have a great IPL and shut everyone down and say I'm back. Yeah. News, of course, what we're hearing is that he's absolutely fully 100% super fit. So hopefully he can get back to his bowling and he can start scoring some good runs also. I So badly yeah, we do miss wish to him see for Hardik Pandya T27. back. It is an important year. There's the Asia Cup, there's the World Cup also. Also, T20 squad के बात करें तो with Rohit Sharma leading India team, he would want a set of like uh, anchors and pinch hitters. So I badly want Hardik Pandya to come in and take that spot, which is currently being tested for, like Venkatesh to audition कर रहे हो जो role में. I really want Hardik Pandya to come and say, "This is my spot," and you just go out. I want it back. Back. You just be my deputy. अगर मेरे को कुछ हो तो तू आ जाओ. I Ah, really want him to do that. yeah. All right, Abhilash, thank you so much for your time. As always, it was lovely talking to you. Thank you, Bisma. And yeah, nice seeing you also after a long time. I hope you will join us again. अच्छा पहले मैच की प्रेडिक्शंस दे जाओ जाते जाते. कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स. क्या कोलकाता अपना बदला ले लेगा फाइनल का? See, as a CSK fan, तो CSK, I would tell CSK will win, but KKR bowling तो ठीक है, bowling मतलब spinners तो ठीक है, लेकिन बैटिंग में तो I still have some iffy biffy. मतलब वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, और उसके बाद एंड्रे रसेल ठीक है, अगर उनका दिन अच्छा है तो he will create havoc. मतलब there is not an extra single bowler like circling like ए मेरे को जितवाएगा except for Naren and Varun. So I would बदला तो it's still it's a big word right now because again it's the first match and also it's the only match CSK are playing with KKR, so anything can happen because it's a first game. Yeah. But KKR presently, I'm not discounting them, but if they deliver as a team, then you will really have a. They They would really have surprised us all last season, so they can be full of surprises this season as well. But I think on paper it would be fair to say that Chennai looks to be the stronger side. on paper, yes. I mean, Yeah. you have the best captain who would is still You ruling have a the. killer bowling line, a batting lineup also, which goes really deep. You have some good bowlers. So team is definitely looking great. So Abhilash, all the best to you and your team, Chennai Super Kings. Let's see how they perform this season. Thank you once again for joining me. Thank you, Bisma. It's been a pleasure. Thanks for having me. Thanks. See you. All right. Hope to see you soon. Bye. See you. Bye. अरे गाइस आप लोग भी बता दें, मैं आप लोगों से रेट ले रही हूँ, आप लोग कैसे रेट करते हैं इस टीम को, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को? डू यू थिंक ये बेस्ट टीम है? नंबर 1 की रेटिंग दें. काफी ज्यादा आपने देखा बैटिंग कितनी डीप जाती है. महेंद्र सिंह के लेवल का कैप्टन है, इनके पास द बेस्ट ब्रेन एंड क्रिकेट, द बेस्ट लीडर इन द बिजनेस.
आपके पास बॉलिंग के अच्छे ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑल राउंडर्स इतने ज्यादा कमाल के हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें जो टीम के बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, दीपक चाहर कम्स तो और बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो जाने वाली है। तो आप इस टीम को कैसे रेट करते हैं? क्रिकेट टॉक ने अपनी प्लेइंग 11 हमारे साथ शेयर किया, प्रोबेबल प्लेइंग 11, और क्रिकेट टॉक का जो स्टाइल और फॉर्मेटिंग है ना, मैंने कभी इसकी तारीफ की थी, वेरी इजी टू रीड। इनके लिए ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे ओपन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अंबती रायुडू आएंगे, फिर मोइन अली, रविंद्र जडेजा, धोनी, शिवम दुबे, ड्वेन ब्रावो, एडम मिल, तुषार देश पांडे, रजवर्धन, हंगरगेकर। बट आपकी टीम में तो वो है ही नहीं, आप उसको खिलाओगे नहीं, रॉबिन उत्तपा को। थैंक यू सो मच विल्वा जी। आरसीबी विल प्ले बोल्ड। रिंकू सिंह द बिगेस्ट मैच विनर। यू गाइस अपने प्लेइंग 11 अगर आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो। अभी आई थिंक इज जर्नलिस्ट आल्सो, ही इज अ वेरी 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 फेमस एंड अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। यूएई में जब भी बात करते हैं ना, ही इज दुबई बेस्ड, तो यूएई में आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को, मैं चीख चीख के बोल रही हूँ। आप अगर बात करो ना खिलाड़ियों की, व्हाट एम आई सेइंग गाइस, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की बात करो, चेन्नई सुपर किंग्स की आर्मी की बात करो, चेन्नई सुपर किंग्स की क्विज की बात करो, ये एक बंदा आपको हर जगह नजर आता है, दैट इज अभिलाष फॉर यू गाइस। ही इज अ फैन बट ही इज नॉट अ नॉर्मल फैन, ही इज अ हार्डकोर फैन, ही हैज अ ब्लॉग, ही राइट्स आल्सो and he talks a lot about Chennai mostly, and is a very big fan of Mahendra Singh Dhoni also. उत्तपा में अब वो बात नहीं रही, लेकिन खरीदा तो है ये उत्तपा को। और रेट कैसे करते हैं, जल्दी से अपनी रेटिंग बताएं ताकि फिर उसके बाद मैं स्ट्रीम को एंड करूं। और मुझे बताएं आज का जो फॉर्मेट था वो अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमने पहला आधा घंटा अपनी डिस्कशन की, जल्दी से अपना स्वॉट एनालिसिस डिस्कस किया, और सेकंड हाफ में हम ओपिनियन लेने उसी चीज पे आ गए गेस्ट का। बस तकरीबन खत्म हो गया। भूख भी लग रही है मुझे, बस मैं 2 मिनट में आ गई। आप भी आ जाओ, कैमरा में हेलो हाय कर लो। अच्छा, अंकित कहते हैं सीएसके को 10 आउट ऑफ 8 नहीं, आप सब समझे नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ, टीम्स को रैंक करो कि नंबर 1 की टीम है, ये पोटेंशियल रखती है कि ये मैच जीत जाएगी, नंबर 2 की टीम है ये फाइनल खेलेगी, नंबर 5 की टीम है ये प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, नंबर 10 की टीम है बहुत ही फजूल की टीम है। उस तरह में नंबर नहीं मांग रही हूँ, उसको नंबर दो, टीम को रैंक करो फ्रॉम 1 being the winner to 10 being the most top team. Only way MI can win this if they had vada pav eating competition, not cricket. Felix, you will get me into trouble one day. CSK number 5 on paper. सीएसके से बेहतर टीम कौन है क्रिकेट? और अगर हम आप कहने के नंबर 5 ऑन पेपर है तो 4 3 2 1 कौन है? मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम नंबर 4 ऑन पेपर है। आरसीबी से बेटर है टीम, नो? आरसीबी से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेहतर है। किंग बाबर की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आई, ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉन कॉनवे, मोइन अहमदी रायुडू, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, एमएस धोनी, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, प्रशांत सोलंकी, एडम मिल। इंटरेस्टिंग टीम लेकिन अच्छी है, लेकिन दीपक अवेलेबल नहीं है। तुम्हारे फॉरेनर्स में कॉनवे, मोइन अली, ब्रावो एंड मिल। ओके, फिर अब कोई किसी को भी पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है क्रिस जॉर्डन, तो उसको पंजाब के पास रहने देते, हमारे लिए फिर भी हैंडी प्लेयर था। वन पंजाब, ये बात की है क्रिकेट टॉक, अब मजा है। नंबर 2 आरसीबी, नंबर 3 आरआर, नंबर 4 एलएसजी एंड नंबर 5 सीएसके। एक्चुअली आई एम हैप्पी विद योर रैंकिंग्स। पंजाब पे आप थोड़े से ज्यादा हो गए हो मुझे खुश करने के लिए, शायद आपकी और मेरी टीम एक ही है तो इसलिए आप शायद ये कह रहे हैं, लेकिन पंजाब की शायद बेस्ट ना हो, बट ये जो टॉप 5 की टीमें बताई है ना, मैं आपके साथ 100% एग्री करती हूँ। लखनऊ सुपर जाए, लेकिन आपने दिल्ली नहीं डाला। मेरे पास इस मिक्स में ना टॉप 5 की टीम्स में दिल्ली कैपिटल्स भी है। दिल्ली की टीम्स इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। तो टीम्स चेन्नई पंजाब से ऊपर आएगी। अच्छा, वरुण कुमार को लगता है चेन्नई पंजाब से ऊपर आएगी, उर्वा को लगता है आरसीबी नो वन नंबर 1। ओके, 9th सीएसके जस्ट अहेड ऑफ पंजाब चौका। अरे जा रे तू फेलिक्स जेलिस किंग।
चेन्नई पंजाब से ऊपर रहेगी। मेरे ख्याल से पंजाब ज्यादा बेटर है चेन्नई से, बट आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि चेन्नई के पास व्हाट रियली डज चेन्नई इज द फैक्ट कि महेंद्र सिंह धोनी इनका कैप्टन है। वरुण कुमार कहते हैं 7वें नंबर पे आएगी, किंग बाबर कहते हैं 4थे नंबर पे आएगी। वही मैं भी बोलती हूँ 4 या एट बेस्ट 5। 6ठे नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स की इतनी अच्छी, आपने इसको 6ठे नंबर पे पहुंचा दिया। चलो ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स, कल हम पंजाब पे डिस्कशन करने वाले हैं या लखनऊ पे। आई थिंक पंजाब पे करेंगे क्योंकि परसों तो आईपीएल स्टार्ट हो जाएगी और मुझे आप लोगों ने बताना है हाउ आई कैन वॉच दी आईपीएल प्लीज। हाँ, टॉक आपने भी बताना है और बाबर तुमने भी बताना है। चेन्नई, राजस्थान, पंजाब एंड मुंबई आर टॉप 4। चेन्नई, राजस्थान, पंजाब एंड मुंबई। मुंबई, विशाल जी, मुंबई की टीम का टॉप में कैसे आएगी जी? कौन सी खिलाड़ी कैसे खेलेगा? ऑलराइट यू गाइस, अभी मुझे भी जाना है, बहुत लंबी स्ट्रीम हो गई है। थैंक यू कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताएं कि मुंबई इंडियंस को ये सॉरी चेन्नई सुपर किंग्स कौन से नंबर पे आएगी आपके ख्याल से, और चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनिंग पेयर कौन सा बेस्ट रहेगा, और कल किस टीम पे डिस्कशन करें वो भी मुझे प्लीज जरूर बताना। पंजाब पे डिस्कशन करें या लखनऊ पे डिस्कशन करें या दिल्ली पे डिस्कशन करें? 3 टीम्स बची और दिन 1 बचा है। आजकल 2 टीम्स पर डिस्कशन करनी पड़े। और ये नया फॉर्मेट कैसा पसंद आया है आपको? इनफैक्ट अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ गेस्ट तब भी मुझे बताएं, मैं आप लोगों को भी एज अ गेस्ट ले सकती हूँ अगर पंजाब के फैन है या दिल्ली के। पंत इफ यू वांट टू, पंत की दीवाने, इफ यू वांट टू बी joining my live, let me know। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें BSMA_A, वहां पे मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी और आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अपना ख्याल रखें, अपने सब लोगों का ख्याल रखें। बाहर जाते हैं तो मास्क पहने, कोविड से भी जरा से केयरफुल रहें क्योंकि टोटली और 100% खत्म नहीं हुआ, वाइप आउट नहीं हुआ है। ठीक है, कीप सपोर्टिंग योर टीम्स एंड कीप सपोर्टिंग मी आल्सो। हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय।